नेक्स्ट टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। वाई न्यूज़ इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्ट्रियल और वियना दोनों ही ओजोन लेयर के लिए थे। 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विद द थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंडर 835 दैट इज द ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन फॉर द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985। ये 85 में आया था वियना, 87 में आया मॉन्ट्रियल। गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट, गवर्नमेंट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इंडस्ट्री, दे वर्क टुगेदर टू कट 99% ऑफ द ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सिस्टम रेटिफाइड बाय ऑल 198। इंडिया ने भी रेटिफाई किया था। किगाली एग्रीमेंट 2016 में आया था, फोर्स में आया था 2019 में। पार्ट टू अचीव एन 80% रिडक्शन इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंजम्पशन बाय 2047। Provided a path to achieve an 80% reduction in hydrofluorocarbon consumption by 2047. 80% hydrofluorocarbon 2047. It adopted because Montreal Protocol led to the replacement of the chlorofluorocarbon with hydrofluorocarbon, which do not destroy the ozone layer but are extremely potent in causing global warming. Ozone layer, it is considered in stratosphere. It absorbs the UV rays. Thinning of the ozone layer 1985. Ozone hole over the Antarctica. Of man-made chemicals having ozone depleting potential. Chlorofluorocarbon, halon, methyl bromide, bromo और क्लोरोमीथेन। यूजेज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या हैं? रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में, फोम में। इम्पैक्ट क्या है? इंक्रीज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, human immune system, decrease agriculture productivity, affects terrestrial and aquatic biogeochemical cycle. Nearly 90% of the Earth's ozone resides in the ozone layer. A non-Montreal Protocol is one of the rare treaties to achieve universal ratification. Ozone layer इसमें आता है. Ozone layer shields Earth from UV rays. Ozone depleting substance, it is an aerosol. EFC आता है एरोसोल रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट से. HCF भी आता था एरोसोल रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट से. हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर से. मेथाइल ब्रोमाइड पेस्टिसाइड है. द क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप an ozone molecule making a hole in the ozone layer. Ultraviolet rays split a chlorine atom away from the CFC molecule. ठीक है. ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स ये किसने किया? द नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैक द ओवरऑल स्ट्रेटोस्फेरिक कंसंट्रेशन किसका? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एंड ब्रोमीन फ्रॉम द लॉन्ग लिव ozone depleting substance related to its peak concentration in early 1990. Its ozone concentration is commonly measured through Dobson unit. Key finding over concentration of ODC in the mid latitude stratosphere in 2022 are back to those observed in 1980 before ozone depleting was significant. United Nations Ocean Conference, the second United Nations Ocean Conference जिसने होस्ट किया था, दूसरी है. The second Kenya Protocol at Lisbon. Kenya and Protocol at Lisbon. It ended with Lisbon Declaration. That's a protocol declaration entitled Our Ocean, Our Future, Call for Action. पहली यूनाइटेड नेशन 2017 में हुई थी, यूनाइटेड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में. इसको फिजी और स्वीडन ने होस्ट किया था. न्यूयॉर्क 2017 ये हुई थी. लिस्बन केनिया एंड पोर्टुगल एट लिस्बन. केनिया एंड पोर्टुगल की हाईलाइट ऑफ द सेकेंड यूनाइटेड नेशन UNOOC, United Nations Ocean Conference. India was a participant and committed to a coastal clean sea campaign. India was a participant and committed to coastal clean sea campaign and will work towards a ban on single-use plastic. Over 150 countries, they collectively agreed to scale up science-based and innovative action to address ocean emergency, supporting the implementation of Sustainable Development Goal 14, that is life below water. This is in line with Coastal Clean Sea Campaign. Coastal Clean Sea Campaign, ban on single-use plastic, innovative action, Sustainable Development Goal 14, life below water. This is in line with the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development, emphasize the particular importance of implementing the Paris Agreement and Glasgow Climate Pact 2021 to help ensure the health, productivity, sustainable use and resilience of the ocean. Health, productivity, sustainable use, resilience. ठीक है. Under emphasize the particular importance of implementing the Paris Agreement 2015, Glasgow 2021, health, productivity, sustainable use and resilience. Health, productivity, sustainable use, resilience. States made voluntary commitment to conserve or protect at least 30% of the global ocean by 2030 within marine protected areas and other effective area-based conservation measures. UNESCO launched a key State of the Ocean report, innovation roadmap of the mission integrated biorefineries. Innovation roadmap of the mission integrated biorefineries. India announced launch of innovation roadmap of the mission integrated biorefineries at Global Clean Energy Action Forum, developed by
co-leads of mission integrated biorefineries with active input from Brazil, Canada, EC and UK, European Commission and UK. Innovative roadmap for mission integrated innovative roadmap for mission integrated biorefinery clean energy, a global clean energy action forum. Co-lead of mission integrated biorefineries with active input from Brazil, Canada, EC and UK. Aims to fill the void by identifying the gap as well as the challenges in current biorefining value chain, prioritize 8 key actions to support the mission and guiding the mission's overall path in achieving its goal. 8 की एक्शन को आइडेंटिफाई गैप्स, आइडेंटिफाई चैलेंजेस, उसके बाद गैप क्या है, चैलेंजेस क्या है, फिर आइडेंटिफाई 8 की actions or prioritize your 8 key actions guiding the mission's overall path in achieving its goal. About mission integrated biorefineries, it is a 7 mission under the mission innovation launched in April 2022, greater international collaboration and financing for energy research and development next 5 years. Co-lead किया है इंडिया मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरी इंडिया और नीदरलैंड, कोर मिशन मेंबर्स ब्राज़ील एंड कनाडा, मिशन सपोर्ट ग्रुप यूरोपियन कमीशन एंड यूके. अर्बन ट्रांजिशन, नेट जीरो इंडस्ट्रीज, मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरीज, क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर फ्यूचर, जीरो एमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल. ठीक है. अर्बन ट्रांजिशन, नेट जीरो इंडस्ट्रीज, मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरीज, क्लीन हाइड्रोजन, green powered future, zero emission shipping, carbon dioxide removal. To develop and demonstrate innovative solution to accelerate the commercialization of integrated biorefineries to replace 10% of the fossil fuel chemicals and materials with bio alternative by 2030. Prioritize 8 collaborative action organized around the 3 pillars of supporting research, development and demonstration, accelerate pilot and demonstration, improving policy and market condition. It funds opportunity on sustainable aviation fuel and hydrogen valley platform was also launched. National funding opportunity on sustainable aviation fuel to support and conduct research, development and demonstration to foster technological innovation. Research, development, demonstration, support करना, accelerate pilot and demonstration, improve policy and market condition, to develop, demonstrate innovative solution, accelerate commercialization of integrated biorefinery. 10% and to fossil-based fuel chemical material with bio alternatives by 2030. National funding opportunity on sustainable aviation fuel to support and conduct research, development and demonstration to foster technological innovation and advanced biofuel for aviation application. Developed by the Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, a global initiative to optimize the hydrogen demand and supply by on-site generation and utilization, utilize the renewable source effectively and water access areas with geographical identity. Mission Life, that is Lifestyle for Environment. Recently, the Prime Minister PM launched Mission Life Lifestyle for Environment at the Statue of Unity at Kevadia, Gujarat to protect the environment. About Mission Life objective, India led global mass movement to nudge individual and collective action to protect and preserve the environment. Concept introduced by Indian Prime Minister at UNFCCC COP26 in Glasgow. COP26 Glasgow, nudge individual collective action to protect and preserve. Nudge individual collective action to protect and preserve the environment. Mobilized at least 1 billion Indians and other global citizens to take individual as well as the collective action. 1 billion Indians and other global citizens to take individual collective action and for protecting and preserving the environment in the period 2022 से लेकर 2027 तक. Within India, at least 80% of all the villages and urban local bodies aim to become the environment friendly by 2028. कितना 80% village urban local bodies environment friendly. Mission duration 5 year program में 2022 से 27. 3 core shift in our collective approach towards sustainability. 2022 से 23 mission will focus on phase 1. Implementation Niti Aayog to curate and incubate in the first year. Subsequently implemented by the Ministry of Environment in a non-linear and non-sequential manner to provide lifestyle that is in tune with our planet and does not harm it. Lifestyle tuned with the planet does not harm it. People living such a lifestyle are pro-planet people, that is P3. उसके बाद फिर यहाँ पे देखो द 3 phases of mission लाइफ पर, एक तो डिमांड में चेंज, फिर सप्लाई में चेंज, फिर पॉलिसी में चेंज. नजिंग इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रैक्टिस सिंपल. अगर आपकी लाइफस्टाइल सिंपल और इफेक्टिव इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस हो जाएंगे इन द डेली लाइफ तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी. और जब डिमांड कम है तो आपको सप्लाई चेन भी चेंज करनी पड़ेगी. लार्ज स्केल इंडिविजुअल डिमांड चेंज टू ग्रेजुअली नज स्टेक होल्डर्स टू रिस्पॉन्ड and tailor the supply and procurement as per the revised demand. Now trigger shifts in large scale industrial and government policy to support sustainable consumption and production by influencing the demand and supply dynamics of India and the each preceding phase will organically feed into the next phase. At the same time, all phases are equally simultaneous in nature. पहली है energy save. 19 actions such as use of LED bulb, use of public transport. 15 action
such as using drip irrigation, water save में drip irrigation, creating rain water harvesting infrastructure etc. उसके बाद 11 एक्शन सच एज यूजिंग क्लॉथ, ये सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करना है, क्लॉथ बैग फॉर शिपिंग और फॉर बैम्बू टूथब्रशेज एक्सेट्रा. 6 है कंपोस्ट फूड वेस्ट एट होम, प्रेफरेबली ये सस्टेनेबल फूड सिस्टम अडॉप्टेड, प्रेफरेबली लोकल अवेलेबल एंड सीजनल फूड. उसके बाद फिर डोनेट old clothes and book, repair, reuse and recycle and furniture, plant trees to reduce pollution, impact, practice natural or organic farming, plant trees to reduce pollution, impact natural or organic farming. ठीक है. 4 actions such as using rechargeable lithium cell, repair, reuse an electronic device. ठीक है. 4 actions such as using rechargeable lithium cell, repair and use electronic device etc. 4 actions such as using rechargeable lithium cell, repair and use electronic devices. 4 actions such as using rechargeable lithium cell, repair and use electronic device. ठीक है. Using rechargeable lithium cell, repair and reuse, plant trees, reduce pollution, healthy lifestyle adopted. जो रिसेंटली एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डेवोस एजेंडा 2022 में होता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द P3 मूवमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा दैट एनालाइज इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट लाइफ लिस्ट 75. डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवोस एजेंडा 2022, इंडिया पीएम इंट्रोड्यूस P3 मूवमेंट लिस्ट 75 लाइफस्टाइल प्रैक्टिस 7 कैटेगरी, 7 कैटेगरी में 75 प्रैक्टिस है. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, रिसेंटली इंडिया अपोज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और कार्बन बॉर्डर टैक्स जो कि EU लाया था इन 27 एडिशन ऑफ COP27 इन शर्म एल शेख. It planned from the European Union proposed in 2021. It will tax carbon intensive products such as iron, steel, cement, fertilizer, aluminum, electricity and hydrogen from 2026. To eliminate the difference in the carbon price paid by the companies subjected to European Union emission trading system or its domestic compliance-based carbon market. Eliminate difference in carbon price जो made by companies that are subjected to European Union emission trading system or its domestic compliance-based carbon market. Part of the Fit for 55 in 2030 package, European Union plan to reduce greenhouse gases by at least 55% by 2023 compared to 1990 level in line with the European climate law. ठीक है. तो उसके लाइन में ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या आप कह सकते हो इसको इट विल टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट जो 2021 यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था और एलिमिनेट डिफरेंस इन कार्बन प्राइस. ठीक है. और फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज, यूरोपियन यूनियन इम्पोर्टर्स जो इम्पोर्ट करते हैं दे विल बाय कार्बन सर्टिफिकेट करस्पॉन्डिंग टू द कार्बन प्राइस ऑन द लाइन ऑफ द यूरोपियन कार्बन प्राइसिंग रूल. नहीं, यूरोपियन यूनियन के जो इम्पोर्टर्स हैं, ठीक है, दे विल बाय कार्बन सर्टिफिकेट दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द carbon price on the lines of European Union carbon pricing rule. Direct deduction can be claimed from their carbon border adjustment mechanism liability if non-EU producer has already paid for the emission in the country of the production, also known as carbon border tax or carbon leakage instrument. Carbon border tax, carbon leakage instrument. Carbon border tax is a tax on carbon emission imposed on imported good leakage instrument, also known as carbon border tax or a carbon leakage instrument. Deduction can be claimed from their CBAM liability if non-EU producer has already paid for the emission in the country of a production. The carbon tax on the carbon emission imposed on imported goods from countries with less strict climate policies creates a level playing field between the import and the domestic production. Carbon leakage undermining a global climate effort due to the relocation of production. फिर यहाँ पे significance क्या है? Address carbon leakage issue, upholds the polluter pay principle, ensure global climate effort not undermined due to carbon leakages, incentivizes non-European countries to increase their climate ambition. It incentivizes as well as the जो यूरोपियन नहीं non-European countries to increase their climate ambition, encourage the more rapid application of renewable technology. फिर यहाँ पे क्या आता है? सप्लायर जो कि non-European है, यहाँ पे रोक लिया जाएगा. इसको पहले CBM सर्टिफिकेट करना चाहिए, लेना पड़ेगा टू इम्पोर्ट. फिर ये बायर है, CBAM ऑथराइजेशन, एनुअल CBM डिक्लेरेशन. फिर ये सप्लायर है. सप्लायर अगर सप्लायर non-European है, CBM not applicable on EU originating good. Okay.
International Solar Alliance, it is in a General Assembly meeting ISA to approve the solar facility, a payment guarantee mechanism expected to stimulate investment into solar projects with two financial components. International Solar, it is a treaty-based intergovernmental organization launched jointly by India and France at the COP21 in Paris in 2015 to provide a dedicated platform for cooperation among the solar resource-rich countries. Dedicated platform किसके लिए? Cooperation के लिए solar resource-rich country and the wider global community, carried by towards 1000 strategy which aim to mobilize 1000 billion of investment कहाँ पर? सोलर एनर्जी सोल्यूशन बाय 2030, delivering energy access to 1000 million people using clean energy solution, installation of 1000 gigawatt of solar energy capacity. और जिसमें 92 countries have signed and ratified the ISA framework. United Nations General Assembly को United Nations Assembly conferred observer status to the ISA in 2017. ISA Assembly is the apex decision-making body of the 110 member. It is open for all member state. Major initiative under ISA Solar Technology and Application Resource Center is TARC. ISA Solar Technology and Application Resource Center. It supports capacity building effort in the ISA member across through training. Capacity build करना है through training. ठीक है. ISA fellowship or mid-career professional for the creation of a skilled and qualified professional manpower for the management of solar energy project. One word, one grid, building a global ecosystem of interconnected renewable energy. एक पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम बनाना है. ठीक है. इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लॉन्च इन पार्टनरशिप विद ISA and the World Bank Group. One word, one grid. Solar payment guarantee for to provide partial guarantee enable investment in geography that do not receive investment. Solar insurance fund and एक पेमेंट गारंटी जिसमें पार्शियल गारंटी मिलती है और उन जोग्राफी से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाती है. सोलर इंश्योरेंस फंड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सोलर डेवलपर्स इन प्री रेवेन्यू फेज ऑफ प्रोजेक्ट to attract private capital to flow into underserved market in Africa. The Assembly also re-elected India and France as its president and co-president. India or France president and co-president. MOU between the International Solar Alliance, International Civil Aviation Organization. MOU was signed to check the growth of CO2 emission in the sector, and the idea of ICO becoming the partner organization of ICO was mooted by India. Aviation sector responsible for around 2.5% of global CO2 emission. 2.5% global CO2 emission सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? International. अच्छा, MOU between International Solar Alliance and International Civil Aviation. Check the growth of CO2 emission in the aviation sector. 2.5% global CO2 emission aviation sector से होता है. 2015 में इंडिया का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द वर्ल्ड फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट. कहाँ पे? 2015 में इंडिया का कोचिंग. एस्टैब्लिश अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑल्सो नोन एज शिकागो कन्वेंशन. International Civil Aviation Organization committed toward reducing carbon emission in the aviation sector. Headquarters is Montreal, Quebec, Canada. Funded and directed by the 193 national government. Other key function maintain as the maintain ICAO Secretariat supporting diplomatic interaction, research new air transport policy and standardized innovation and directed endorsed by the government through ICAO Assembly. New air transport policy, standardized in innovation. Global Environment Facility GEF Council. Recently the 62nd meeting will be the final council of the कौन सी कितने नंबर की मीटिंग? 62nd meeting will be the final council of the Global Environment Facility Trust Fund GEF7. ठीक है. क्लोजिंग 4-year फंडिंग साइकिल एंड कमर्सिंग GEF8 साइकिल. GEF7 सेवगार्ड द फॉरेस्ट हो गया, लैंड, वाटर, climate, ocean, build green cities, protect threatened wildlife and tackle marine plastic pollution. Key highlight of GE7 Council leaders pledge for nature and to reverse species loss by 2023. nature leaders जो हैं वो pledge कर रहे हैं for nature to reverse species loss by 2023 by protecting land and ocean territory with globally important biodiversity. 29 donor countries they have plus 5.33 billion and for GEF8 replenishing period that is जुलाई 2022 से लेकर जून 2026 तक to meet the nature and the climate target. कितना देंगे? कितनी डोनर कंट्रीज है? 29. कितना देंगे? 533 बिलियन. 29 donor countries, 533 billion. GEF8 replenishment period. It addresses the threat from the climate change, land degradation, chemical waste, easing pressure on ocean and international water. Climate change, land degradation, chemical and waste, easing pressure on ocean and international water. GEF main governing body. 32 members appointed by constituencies of GEF member countries. 14 developed countries है, 16 developing countries है, 2 from economies in transition. Member rotate at different interval determined by each constituency. India presently a member of the constituency comprised of the following countries जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया,
India presently a member of the constituency. Members rotate at different interval determined by each constituency. इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, नेपाल भी है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका. They meet twice annually, make decision by consensus, develop and adopt and evaluate the operational policies as well as the program for GEF finance activity. Fund managed by the Global Environment Facility, that is Special Climate Change Fund, Least Developed Countries Fund, Special Climate Change Fund. 2001 में लॉन्च हुआ था टू फाइनेंस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एडाप्टेशन. Special Climate Change Fund, Adaptation, Technology Transfer, Capacity Building. Adaptation, Technology Transfer, Capacity. एक मिनट. Special Climate Change Fund के लिए हम Adaptation, Technology Transfer and Capacity Building, Energy Transport, Industry, Agriculture, Forestry, Waste Management, Economic Diversification, open to all vulnerable developing countries. The GEF New Climate Change Adaptation Strategy for the 2022-2026 period will focus on the Special Climate Change Fund and support in the following two priorities: supporting the adaptation need of the small island developing state, strengthening the technology transfer, innovation and private sector engagement. Technology transfer, innovation, private sector एंगेजमेंट. फिर आता है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज फंड इस्टेब्लिश इन 2000, दोनों ही 2001 में, टू डेवलप अ वर्क प्रोग्राम टू असेस द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ओनली एग्जिस्टिंग फंड विद मैंडेट टू फाइनेंस द प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल प्रोग्राम अडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन. NAP यूज एक्सिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द कंट्रीज प्रायोरिटी फॉर अडेप्टेशन एक्शन, कि इस कंट्री की प्रायोरिटी क्या हो, कैसे अडेप्ट कर सकते हैं. ऑल्सो सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल अडेप्टेशन प्लान एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर्क प्रोग्राम अंडर द UNFCCC. GEF स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम. अच्छा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में देखते हैं. ये स्टैब्लिश हुआ था 1992 रियो अर्थ समिट एंड इज ओनली मल्टीलेटरल फंड दैट वर्किंग अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल हेल्थ, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज वर्क टू एड्रेस द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू विद 5 फोकल एरियाज. दैट्स एक 1992 में रियो अर्थ समिट के टाइम पर लॉन्च हुआ था एंड इज ओनली मल्टीलेटरल फंड वर्किंग अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ. इट सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग in countries work to address the world's most pressing environmental issue. 5 focal areas हैं: biodiversity loss, chemicals and waste का क्या कर रहे हैं, climate change, international waters, land degradation. 185 मेंबर करें. GE is a financing with 5 major international environmental convention: UNFCCC, CBD, Framework Convention on Climate Change, United Nations Convention on Biological Convention on CBD. उसके बाद फिर मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेसर्टिफिकेशन. ये सारे 5 लोग यहाँ पर आते हैं. फिर फंड्स मैनेज बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, सपोर्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल शिप बैलेंस वाटर ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन शिप बैलेंस वाटर ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, मार्पोल ट्रीटी फॉर शिपिंग, यूनाइटेड कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, यूएन एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैंडलिंग फिश स्टॉक एंड हाईली माइग्रेटिव फिश स्टॉक. उसके बाद फिर GEF स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम 2022 marked the 7th phase of the small grant program and is jointly implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, United Nations Development Program, the Energy and Resource Institute. It's a corporate program of the Global Environment Facility. It was launched in 1992 during the Rio Earth Summit. It provides financial technical support to local civil society to develop and implement innovative local action that addresses the global environmental issue. Provide financial and technical support किसको, local civil society को, जिससे कि वो डेवलप कर सकें एंड इम्प्लीमेंट into innovative local action that addresses the global environmental issue. It works closely with and complements other GEF projects and programs supporting 136 countries and the fund grant up to $50,000. Other initiative in news: Major Economics Forum on Climate and Energy. Major Economics Forum was aimed to build on the progress achieved at COP26 by further strengthening the climate action while also addressing urgent energy and food security concerns arising from the Russia-Ukraine war. Launched in 2009 by the Major Economic Forum on Climate and Energy. Major Economic Forum. Major Economics Forum meeting was aimed to build on the progress achieved by COP26 by further strengthening the climate action and also addressing the urgent energy and food security concerns arising from the Russian-Ukraine war की वजह से फूड सिक्योरिटी और एनर्जी क्राइसिस हो गया था. लॉन्च इन 2009 by US President, it facilitated dialogue among the major emitting countries, developed or developing to advance efforts against the climate change. Major participating countries: Australia, Brazil, Canada, China, European Union, France, Germany, India, Japan and UK member है. Again, major economic for climate and energy. Together account for roughly 80% of the global
जीडीपी एंड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जीडीपी का 80% इन सारी कंट्री में करती हैं ग्लोबल मीथेन प्लस एनर्जी पाथवे टैकलिंग मीथेन लीक्स वेंटिंग एंड फ्लेयरिंग फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर। ग्लोबल मीथेन प्लस एनर्जी पाथवे कलेक्टिव इन 2030 जीरो एमिशन व्हीकल गोल एंड ग्रीन शिपिंग चैलेंज टू रिड्यूस एमिशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। एमिशन जीरो एमिशन व्हीकल गोल ग्रीन शिपिंग गोल। Clean energy technology demonstration designed to break dependence on fossil fuel. Efforts to enhance food security by increasing their fertilizer efficiency. India also called upon the members of the MEF to launch the global movement on LIFE, World Green Economy Summit. Union Minister for Environment and Forest Climate attended Minister Roundtable for Green Economy at World Green Economy Summit in Dubai, led by UAE. World Green Economy Summit led by UAE aimed to propel action to deliver a sustainable future. Action for Sustainable Future. It brings together the world-class experts in critical sectors from around the world to directly focus on advancing global green economy and sustainability agenda. कैसी इकोनॉमी ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी एजेंडा। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडिया इज होस्टिंग द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सीनियर ऑफिशियल मीटिंग डिस्कशन ऑन टॉपिक्स such as energy transition, clean power, green steel and hydrogen held at Vietnam. It's a high-level global forum of 29 member countries to promote policies and programs that advance clean energy technology through sharing of policies and program किसके लिए क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के तो शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पॉलिसीज प्रोग्राम जिससे कि आप क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर पाए थ्रू शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड द बेस्ट प्रैक्टिस। यूनाइटेड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू टेक पार्ट इन ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम at Pittsburgh, US. Global Clean Energy Action Forum is first of its kind meeting where 30 countries will participate. A joint convening of the 13 Clean Energy Ministerial 7 Mission Innovative Science-Based Target Initiative, a partnership between the CDB, United Nations Global Compact, World Resource Institute, and Worldwide Fund for Nature. It drives climate action kisme in private sector by enabling organizations to set science-based emission reduction target. ड्राइव क्लाइमेट एक्शन किस में प्राइवेट सेक्टर में बाय इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एक्शन किस में प्राइवेट सेक्टर में एक सेकेंड साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव पार्टनरशिप बिटवीन CDP, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। CDP इट इज़ अ ग्लोबल नॉन पार्टनरशिप बिटवीन CDP हो गया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ड्राइव क्लाइमेट एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर by enabling organizations to set science-based emission reduction target. Also the lead partner of the business ambition for 1.5 degree Celsius campaign is a call for global action. United Nations agencies, business and industry leaders mobilize companies to set non-zero science-based target. Zero emission vehicle transition council global forum formed in 2020 accelerate the pace of the global transition to zero emission vehicle. COP26 India participated, represented by Niti Aayog, participated in the 4th minister dialogue of the Zero Emission Vehicle Transition Council. Brings together the ministers and the representative of some of the world's largest automobile market to collectively address the key challenges in transition to zero emission vehicle, enable faster, cheaper and easier transition to electrical vehicle. पर कितना होना चाहिए फास्टर चीपर एंड ईजियर ट्रांजिशन फास्ट चीप ईजियर ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है लीडर्स इन द क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन क्लाइमेट चेंज Urban Affairs, World Resource Institute jointly launched ITNA. It's a practice-based learning program build capacity among the urban professionals to lead the climate action across the sectors and geographies in India. It envisions the capacitating 5,000 professionals and preparing them to champion the climate change adaptation and mitigation solution. Administrative Training Institute ATI Mysuru became the first delivery partners of the leaders in the climate change management. कौन है Administrative Training Institute कहाँ पर मैसूरू में फर्स्ट डिलीवरी पार्टनर ग्रीन इवेंट टूल गल्फ ऑर्गेनाइजेशन and for research and development UNFCCC Secretariat United Nations unveiled an online green event tool to facilitate eco-friendly event platform for institute at the कितना गल्फ है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम तो आ ही रहा प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट एट द यूनाइटेड क्लिनिकल COP26 Glasgow Scotland 2021 to encourage the action to reduce the negative impact of the event including the carbon footprint at planning and the implementation। किसी इवेंट का उनकी कार्बन फुटप्रिंट को इंक्लूड करने पे उनका क्या इम्पैक्ट रहता है ऑन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम The Global Climate Observing System Implementation Plan was released by the World Meteorological Climate Observing
organization identify the gaps in Earth observation and areas that require improvement. It regularly assesses the state of the global climate observation at atmosphere, land, and ocean, and produces guidance for the World Meteorological Organization, International Government, until Oceanographic Commission of the United Nations, UNESCO, United Nations Environment Program, UNEP, and International Social Council. International Science Council, Global Alliance for Industry Decarbonization, International IRENA, co-founding partners Siemens Energy and 13 countries including Tata Steel and Jindal Steel. They have works have launched the Global Alliance for decarbonization process for reducing anthropogenic CO2 emission, formed under the Bali Declaration to accelerate the net zero ambition and decarbonization of industrial value chain in the pursuit of Paris Agreement climate goal. Will strengthen the dialogue एक दूसरे लोग बात करेंगे as well as the coordination by industry stakeholders for across the public and private sector. First meeting of alliance to take place at the UNFCCC COP26. Climate mitigation and adaptation. India's updated NDC. India recently submitted its implemented national determined contribution at the UNFCCC. पहला 90 नेशनल joint contribution जो है वो सबमिट किया था इंडिया ने 2015 में. इंडिया का updated NDC prepared after carefully considering the India's national circumstances and the principle of common by definition and respective capability represent the framework CVDR, common by definition and responsibility respective capability represent the framework for the India's transition to cleaner energy for the period 2021 से लेकर 2030. Update 2 of the 3 quantitative target of the 2050 NDC related to the emission intensity and share of the non-fossil fuel in the installed electricity capacity. Update 2 of the 3 quantitative. दो पंचामृत commitment promises made during the COP26 inclusion not converted into official target. जैसे दो पंचामृत जैसे 500 gigawatt non-fossil fuel energy and emission of at least 1 billion ton of CO2 and 500 gigawatt of non-fossil fuel energy and emission of at least 1 billion ton of CO2 by 2030. इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट एट COP26 पंचामृत क्या था? अचीव द नेट जीरो बाय 2017, इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030, मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, रिड्यूस द टोटल projected carbon emission by 1 billion ton from now till 2030, reduce the carbon intensity of its economy by 45 by less than 45% by 2030, reduce the carbon intensity of its economy by less than 45% by 2030. तो दो तो इसने अपने not converted into official target. ठीक है. India's nationally determined contribution INDC target for 2030 previous updated and progress क्या? Reduce the emission intensity of its GDP. हमारा प्रीवियस एनडीसी में हमने क्या रखा था? हमने किया था कि 33 से लेकर 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. लेकिन अपडेटेड वाले में हमने कहा कि 33-35 से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा 45 करना पड़ेगा. और उसके बाद फिर एस्टिमेटेड रिडक्शन कितना है? अभी 28% का ही है. फिर क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड. या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो, लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड. ठीक है. इसमें फाइनेंस कहाँ से आएगा? ग्रीन क्लाइमेट फंड से. हमें 40% है क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल 40%. अभी अपडेट में 50% कर, हमने 42.3% अचीव कर लिया. क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक टू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. अभी हमें क्या करना है? 2.5 से 3 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विपमेंट. लेकिन ये हमने सेम ही रखा है, 2.5 से 3 बिलियन ही किया. क्वालिटेटिव टारगेट करें प्रीवियसली एनडीसी 2015 में अपडेटेड में. पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोपोगेट अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग. कैसे होनी चाहिए? हेल्दी एज वेल एज सस्टेनेबल बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशन एंड द वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन. पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोपोगेट अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन इंक्लूडिंग थ्रू a mass movement lifestyle for environment as a key to combat climate change. Adopt a climate friendly and a cleaner path than the one following hitherto by others at corresponding level of economic development. तो क्या होना चाहिए? economic development होना चाहिए, but along with that we have to adopt a climate friendly and a cleaner path. Same. Better adapt to climate change by enhancing investment in क्या करना चाहिए? हमें क्लाइमेट चेंज से अडाप्ट करना चाहिए. उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. किस में इन्वेस्ट करेंगे? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में. इन सेक्टर वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज. और कौन कौन से सेक्टर्स हैं? एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्स, हिमालयन रीजन, कोस्टल रीजन, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. मोबिलाइज डोमेस्टिक and new and additional fund from developed countries to implement the above mitigation as well as adaptation in view of the resource required and the resource gap. Build capacity सबकी बढ़ाओ. Create domestic framework, international architecture for quick diffusion of cutting edge. देखो कैपेसिटी को बढ़ाओ, डोमेस्टिक फ्रेमवर्क बनाओ, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर
जिससे कि जो कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है उनका डिफ्यूजन हो जाए एंड जॉइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर सच फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। द अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट अडाप्टेशन फेलर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं, बहुत धीरे कर रहे हैं, और अगर हम क्लाइमेट अडाप्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली तो फिर हमारा वो पूरा वर्ल्ड एक रिस्क पे आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। Principle for Locally Led Adaptation (LLA). Global Commission on Adaptation develop a set of principles to strengthen locally led adaptation. Global Commission on Adaptation was established by Netherlands and the leaders of the 22 other countries, ठीक है, convening countries including India in those agenda with the mandate to accelerate the adaptation by elevating the political visibility of adaptation and focusing on the concrete solutions. The principle launched at the the 2021 Climate Adaptation Summit are intended to guide the adaptation community as it moves program funding. The principle 2021 Climate Adaptation Summit में हुआ था, are included to guide the adaptation community as it moves program funding and practices to adaptation that is increasingly owned by local funder. Key findings of the report: more than 8 out of the country, 84% of the UNFCCC have at least one national adaptation planning instrument. Combines adaptation mitigation finance flow in 2020 fell at least US 17 billion short of the US 100 billion and of the US Independent Pledge. हमने कितना किया था? More than 8 out of countries have at least one national adaptation planning instrument. National adaptation planning instrument सबके पास है. Adaptation mitigation finance flow in 2020 जो है वो गिर गया, ठीक है, कितना? At least US 17 billion short, ठीक है. Adaptation finance gaps in developing countries is likely 5 to 10 times greater than the current international adaptation finance flow. United Nations Environment Program headquartered Nairobi, Kenya, international organization established in June 1972 at command of the United Nations from Conference of the Human Environment, Stockholm Convention. It said the global environment agenda promote the coherent implementation of the environmental dimension of sustainable development and serves as an authority advocate for the global environment. 193 member countries and they work under the umbrella of the United Nations. 2003 Agenda for Sustainable Development identify and address the most relevant environmental issue of our time. Structure chaired by Executive Director ED depends on the voluntary contribution for 95% of its income. It administers or provides secretariat function for many multilateral एडमिनिस्टर करता है और सेक्रेटरी फंक्शन देता है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट एंड अदर एंटिटी. ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट. Emission Gap Report 2022 released by UNEP. It's an annual report that assesses the emission gap. Key finding of the report: to get on track for limiting to global warming to below 2.0 degree and 1.5 degree Celsius, global greenhouse gas emission must be reviewed by 30% and 45% and respectively compared with the current policy projection. India is the third largest greenhouse gas emitter. China सबसे ज़्यादा फर्स्ट है, फिर यूएस है, फिर इंडिया है, बट इस पर किलोमीटर एमिशन रिमेन्स फार बिलो द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 2.4 और 10 CO2 इक्विवेलेंट. द बैम्बू बॉटम 50% हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द ग्लोबल टोटल GHG, whereas the top 1% contribute 17%. Emission gap: the gap between the pledges taken by different countries to reduce GHG emission and the estimated, ठीक है, प्लेज कितना लिया था और अभी एस्टिमेटेड रिडक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस प्रेफरली 1.0 द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. तो सबसे पहले साइट्स 1973 जो भी UNEP के अंदर आता है. फिर आता है बॉन कन्वेंशन 1979. साइट्स आता है 1973 में, 1973. फिर 1979 में आता है बॉन. फिर आता है 1985 में वियना कन्वेंशन एंड फिर 1989 में बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबॉन्डरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड द डिस्पोजल. फिर आता है आपका CBD 1992. फिर आता है रोटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर PIC for the certain hazardous chemicals in pesticide in international trade in 1998. सेवेंथ है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ द persistent organic pollutant 2001. मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी 2013. मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी 2013. स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ द persistent organic pollutant 2001. रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड 1998. कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड कार्बन स्टोरेज
Carbon capture, utilization and storage. Niti Aayog launched carbon capture, utilization and storage policy framework and its deployment mechanism in India. National Center of Excellence, establishment of 2 National Center of Excellence in carbon capture, utilization and storage at IIT Bombay and Zankasar, Bangalore. These centers will facilitate the capturing and mapping of the current research and development and innovation facilities को capture करो, map करो in the domain, also develop the network on researcher and industries and stakeholders. Major innovation and challenge on CCUS to enable the near zero CO2 emission from power plant and carbon. Mission innovation challenge to enable near zero CO2 emission from power plant and carbon intensive industry. Accelerating CCS technology, carbon capture storage technology act. Accelerating CCS technology to facilitate research and development and innovation that can lead to development and of safe and cost effective CCUS technology. ये टेक्नोलॉजी कैसे होनी चाहिए? सेफ एंड cost effective. Aims to develop and implement a practical framework to accelerate research and development on CCUS India. It explores the importance of technology as an emission reduction strategy to achieve deep decarbonization from the hard to abate sector. Explore the importance of the technology. टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से एमिशन रिडक्शन हो सकता है. डीप डिकार्बनाइजेशन, हार्ड टू अबेट सेक्टर्स लाइक स्टील एंड सीमेंट. Encompasses technology to remove CO2 from the flue gas and the atmosphere, followed by recycling the CO2 for utilization and determining the scale and the permanent storage option. Flue gas are produced when coal, oil and natural gas, wood or any other fuel is combusted in industrial furnace, which is a power plant, steam generating boiler or other large combustion device. CO2 captured using CCU technology are converted into fuel, methane and methanol, refrigerant, building material. Captured gas is used directly in fire extinguisher, pharma. जो हमने गैस कैप्चर करी है, CO2 captured using CCU technology are converted into, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूल में, या तो मीथेन या तो मेथनॉल. रेफ्रिजरेंट और बिल्डिंग मटेरियल. कैप्चर्ड गैस इज यूज डायरेक्टली इन फायर एक्सटिंग्विशर. फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में, एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर. Different carbon capture technology for different applications as follows. Chemical solvent, preferably when dealing with gas stream that are lean in CO2, have relatively lower pressure such as flue gas stream from power plant. Physical solvent work well on gas steam with relatively higher CO2 consumption and pressure such as pre-combustion capture in the case of gasification project. Adsorption, suitable for gas stream with moderate to high pressure and moderate CO2 concentration such as steam, methane, deforming flue gas. Cryogenic separation, preferable in case where the cost of power is low. Capture CO2 from example biomass fuel power station, industrial facilities for directly from air. The transport CO2 is moved by ship, truck or pipeline from the point of capture to the point of use or storage. Storage of CO2 permanently in underground geological formation. Capturing CO2 is used as a resource or feedstock to create product and service. Uniform carbon trading market. The central government is considering implementation of the carbon trading scheme that will subsume all carbon trading mechanism in India. The government proposes to begin with a voluntary carbon market and gradually shift to cap and trade. The government proposes to begin with voluntary carbon market, is considering the implementation of the carbon trading scheme that will subsume all carbon trading mechanism in India. उसके बाद फिर इसमें पहले वॉलंटरी, उसके टेलर विद कैप एंड ट्रेड. फिर इंडस्ट्रीज आर गिवन एमिशन टारगेट लाइक इन EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम. मार्केट बेस्ड सिस्टम फॉर बाइंग. It's a market-based system for buying as well as selling permit and credit for carbon emission. Most used model cap and trade. The idea of cap and trade originated with the Kyoto Protocol. How does the cap and trade work? अब ये हो गया कार्बन मार्केट. ऑक्शंस एंड सेल्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड ऑफसेट क्रेडिट. परचेज का करता है जिसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन नॉर्मल लेवल से ऊपर चला गया है, ठीक है, और ये रिड्यूस GHG एमिशन है. ट्रांजैक्शन अमंग द emitter and the participant. So an overall limit or cap set on the amount of emission allowed from the significant sources such as carbon, including power industry, automotive and air travel. Government issues permit up to the agreed limit. Each permit is usually measured in terms of the 1 ton of CO2 equivalent. If a company curbs its own carbon significantly below the cap, it can trade the excess permit on the carbon market for cash. If not, it may have to buy extra permit. Market mechanism allows countries on voluntary direct bilateral cooperation basis to sell any extra emission reduction they have achieved compared to their nationally determined contribution target. Trading of emission reduction created anywhere in the world by the public and the private sector. Sustainable development mechanism.
ठीक है. मार्केट अप्रोच इन द पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6. क्योटो प्रोटोकॉल क्रिएटेड 3 मार्केट एमिशन को ट्रेडिंग, फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. Paris Agreement created a new framework, a mechanism and framework for non-market approaches. ये market वाला approaches can exist at international, national, state और local level. 2021 में China launched the world's largest market for carbon emission trading, digital monitoring, report and verification. Digital monitoring, reporting and verification. With growing interest of country is to participate in carbon market to meet their climate change goal. Innovative if digital monitoring, reporting and verification are evolving to track reduction in greenhouse gas emission, represent the first step in end-to-end digitalization of post-2020 carbon market based on the AI, smart learning, blockchain, smart sensor, drone, etc. AI, machine learning, blockchain, smart sensor, drone. Renewable energy certificate. It's a market-based instrument to promote renewable energy and facilitate compliance of renewable energy purchase obligation by the obligated entity. One renewable energy certificate is treated equivalent to 1 megawatt hour. Can also be bought voluntarily by entity. Two categories of renewable energy certificate: solar or non-solar. Traded only on the Central Electricity Regulatory Commission approved power exchange like India Energy Exchange, Power Exchange India. Market a year energy saving certificate under perform, achieve and perform, trade and achieve. ठीक है, perform, achieve and trade. In a market based regulatory, it is a market based instrument. It's a market based regulatory instrument to reduce the specific energy consumption, to promote renewable energy and compliance of RPO obligation. यहाँ पे क्या था? Reduce the specific energy consumption in energy intensive industry. Energy saving certificate, they are issued by the central government for the difference of the quantity between the notified target and achieve SEC target. Cover 13 sector designated जैसे एल्यूमिनियम हो गया, डिस्कॉम हो गया, होटल्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पल्प एंड पेपर, थर्मल पावर प्लांट एंड ट्रेडिंग ऑन. ये किसमें करते हैं? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सर्क. ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड. इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड. अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट. पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत. पल्ली इन जम्मू बिकेम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत. Carbon neutrality, balance between the emitting carbon and absorbing carbon from the atmosphere in carbon sink. You have to maintain a balance between the emitting carbon and absorbing carbon from the atmosphere in carbon sink. Carbon sequestration, removing carbon dioxide from the atmosphere and then storing it. Palli in Jammu became the India का पहला carbon neutral पंचायत. Carbon neutrality, balance between the emitting carbon and the absorbing carbon from the atmosphere in carbon sink. Carbon sequestration, removing carbon oxide from the atmosphere and then storing it. पहले रिमूव करो फिर स्टोर कर दो. क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट इमेजेस, साइंटिस्ट ऑब्जर्व द ब्रेकअप ऑफ द कॉन्गर आइस शेल्फ. ये कॉन्गर आइस शेल्फ कहाँ पे है? ईस्टर्न अंटार्कटिका में. राइजिंग टेम्परेचर बाय with both north and south pole seeing warmer than average temperature despite opposite season. Also new research highlighted that Antarctica is approaching a climate tipping point by 2007 when Antarctica ice could begin melting at a runaway rate. Climate tipping point where any small change could push the earth system into abrupt or irreversible change. ये ऐसा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा भी स्मॉल चेंज होगा, इट कुड पुश द अर्थ सिस्टम इनटू अब्रप्ट एंड इरिवर्सिबल चेंज. क्लाइमेट 9 क्लाइमेट ट्रिपिंग पॉइंट इनटू द अंटार्कटिका आइस शीट. ये पहला वाला जो है वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, फ्रिक्वेंट यहाँ पे ड्राउट बहुत ज़्यादा आते हैं. सेकेंड वाला है आर्टिक सी आइस, मैसिव लॉसेस. थर्ड है अटलांटिक सर्कुलेशन, स्लो डाउन हो गया है. फिर आता है बोरियल फॉरेस्ट, फोर्थ है बोरियल फॉरेस्ट, इंक्रीज इन फायर, यहाँ फायर बहुत ज़्यादा आते हैं. कोरल रीफ फिफ्थ है, मासिव डाई ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास है. सिक्स्थ है ग्रीनलैंड आइस शीट, आइस लॉस एक्सेलरेटिंग. फिर आता है परमाफ्रॉस्ट, सेवन्थ है. सेवन कहाँ पे दिख रहा है? ये हाँ, यूरोप के आसपास, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग. फिर आता है वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट, आइस लॉस एक्सेलरेटिंग. फिर आता है विल्कस बेसिन, नाइन्थ. ईस्ट एंटार्क्टिका आइस लॉस विल्कस बेसिन. Greenwashing, Reserve Bank of India Robert Economic call for a taxonomy on green finance and to avoid the risk of greenwashing, a term coined by the environmental J. Westerveld in 1986. J. Westerveld. The practice of misleading the general public, mislead करते general public को into believing that companies, sovereign or civic administrators are doing more for the environment than they actually are. It may involve making a product or policy seem more environmentally friendly
or less damaging than it is in reality. Environment friendly, less damaging may involve making a product or policy seem more environment friendly, less damaging. Fibbling, make environment claims that are simply false. Fibbing, ऐसा क्लेम जो फॉल्स है, नो प्रूफ, मेकिंग एनवायरमेंट क्लेम दैट कैन नॉट बी सब्सटैंशिएटेड. ठीक है, पहले तो एकदम ही फॉल्स, अगर है तो प्रूफ नहीं दे पा रहे हो. हिडन ट्रेड ऑफ सजेस्टिंग अ प्रोडक्ट इज ग्रीन बेस्ड ऑन द सिंगल एनवायरमेंट एट्रीब्यूट. Vagueness, being purposely non-specific about operation or material. Less evil, apply a do-good label to an environmentally unfriendly product. Irrelevance, claiming to avoid using a material or practice that is already illegal or non-standard. Forms of greenwashing: fibbing, no proof, hidden trade-off, vagueness, less evil, irrelevance. Killing curve, CO2 levels measured at Mauna Loa, CO2 level observed at Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory, Hawaii, run by U.S. National Oceanic Atmospheric Administration. Narcotically, what they were 4 million years ago. MLO site for daily record of global atmospheric CO2 consideration 1958. Under the killing curve, CO2 concentration, parts per million, ppm, air parts per million. Located slope of Mauna Loa volcano, world's largest active volcano. Other gases measured include carbon monoxide, methane, nitrous oxide, sulfur dioxide. Carbon monoxide, methane, sulfur dioxide, nitrous oxide. Named after Dr. Charles David Keeling, longest uninterrupted instrumental record of atmospheric CO2 in the world. Report indices. State of the Global Climate Report 2021 World Meteorological Organization. Details by the World Meteorological Organization give details of the climate indicator such as the temperature, ocean heat, ocean acidification, sea level rise, sea ice glacier, and extreme weather. Components of the IPCC Assessment Report. WMO give details of climate indicators. Temperature, डिटेल्स ऑफ द क्लाइमेट इंडिकेटर, जैसे टेम्परेचर क्या है ओशन की हीट के हिसाब से, ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, सी आइस ग्लेशियर, एक्सट्रीम वेदर. Intergovernmental organization established by the ratification of the WMO in 1950. It originates from the International Meteorological Organization, which dates back to 1873, dedicated to the international cooperation and coordination on the state and behavior of the Earth atmosphere, उसका interaction with the land and the ocean, the weather and the climate it produces, and the resulting distribution of water resource. इसमें 193 member states and territories हैं. Its supreme body is the World Meteorological Congress, the specialized agency of the United Nations. सुप्रीम बॉडी कौन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ग्लोबल मीन सी लेवल रीच अ न्यू रिकॉर्ड हाई इन 2021, राइजिंग एन एवरेज ऑफ 4.5 mm पर ईयर ओवर द पीरियड 2013 से 2021. सी लेवल अलॉन्ग ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन कोस्ट राइजिंग फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज. कितना हो रहा है? रेजिंग एन एवरेज 4.5 mm पर ईयर. ठीक है. ग्लोबल मीन सी लेवल रीच अ न्यू रिकॉर्ड हाई इन 2021, राइजिंग एन एवरेज 4.5 mm. Released by the World Meteorological Organization in partnership with Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. Another GOES, Global Ocean Observing System Report Card. GOES, Global Ocean Observing System. It's a permanent global system for observation, modeling, analysis of marine and ocean data. Highlight biological observation for the first time and identifies gap in the system. Pointed at the inequality in operational surveys across the oceans like Indian, Atlantic and the Southern Ocean. Greenhouse Gas Bulletin 2022, released by WMO. Global Ocean Observing, World Meteorological Organization along with the UNESCO, another GOES partner. यहाँ पे ये ग्लोबल गैस बुलेटिन, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसने लॉन्च किया? WMO ने. एटमॉस्फेरिक एनुअली लेवल ऑफ 3 million कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड रिकॉर्ड न्यू हाई इन 2021. एमिशन विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 2020 by 2030. Okay. Climate investment opportunities in India's cooling sector. World Bank. By 2030, over 160 से 200 million people across India they would be exposed to lethal heat waves annually. कितने people? 160 से 200 million. By 2030, around 34 million people will face job losses due to the heat stress. उनकी वजह से 34 मिलियन की तो जॉब लॉस चली जाएगी. By 2037, demand for cooling is likely to be 8 times than current level, leading to an expected rise of 435% of the annual GHG over the next decade. ये चीज़ें थे रखना. Climate and development and agenda for action. Climate और डेवलपमेंट क्या होगा? पैसा आएगा. पैसा कैसे होगा? वर्ल्ड बैंक देगा. Agenda for action compiles and analyzes the result from the World Bank group. Country climate and development. World Bank country climate and development report. Climate and development and action. Agenda for action. Climate and development
and report new core diagnostic reports that indicate the climate change development consideration. Cover 24 countries that account for 34% of the world GHG emission. Nationally determined contribution synthesis report 2022 में रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन रिपोर्ट. ये सेकंड सच रिपोर्ट है. एनुअल समरी निकलती है ऑफ द क्लाइमेट कमिटमेंट मेड बाय द कंट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द GHG emission. Annually, NDC of 193 parties to the Paris Agreement, including 24 updated on new NDC submitted after COP26 Glasgow. Cumulative CO2 emission in 2020 से 2030 likely use up 86% of the remaining carbon budget. The combined climate pressures could put the world on track for about 2.5 degrees Celsius or temperature rise by those years, and from a possibly range of 2.1 to 2.9. Investing in carbon neutrality, Europea or the new Green Wave, released by the new carbon neutrality, United Nations Food and Agriculture Organization and European Bank for Reconstruction and Development. Carbon neutrality or net zero CO2 emission. Anthropogenic CO2 balance emission balanced globally by anthropogenic CO2 removal over a specified period. Investing in carbon neutrality, Utopia or a new green wave. State of the Climate Action Report 2022 released by the Climate Action Tracker. It's an independent analytical group comprising and Climate Analytic and New Climate Institute, United Nations High-Level Climate Change Champion, World Resource Institute and other. It provides a very comprehensive assessment of the global gap in climate action across the world's highest emitting system. Okay. Climate transparency. It is a global partnership with a shared mission to stimulate a race to the top in the climate action G20 countries toward enhanced transparency. G20 members responsible for around 3/4 of the global emission. 6 G20 members, including India, did not sign the global methane pledge. ग्लोबल कार्बन 2005 में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2001 में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट शेयर पार्टनरशिप बिटवीन द इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड डाइवर्सिटी पार्टनरशिप ऑफ इंटरगवर्नमेंटल एनजीओ टू डेवलप the complete picture of the global carbon cycle. Global CO2 concentrations set new record. Atmospheric CO2 concentration are now 51% of the pre-industrial level. Projected CO2 emission decrease in China and European Union, but increase in US, India, 6% rest of the world. Climate Change Performance Index, German Watch, New Climate Institute, Climate Action Network. German Watch, New Climate Action. Evaluate 15 countries in European Union, including India. Greenhouse gas emission, renewable energy use, climate policy. Greenhouse gas emission, renewable energy use, climate policy. Also track implementation of the Paris Agreement by various countries. First 3 places left empty as no country performed well in all indexes. डेनमार्क 4th आई और इंडिया की रैंक 8th है. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पहले 3 पोजीशन खाली, डेनमार्क 4th है और इंडिया जो है 8th पे है. जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. उसके बाद फिर आता है जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट. कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट रिलीज बाय सेक्रेटरी ऑफ कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट coalition. ये voluntary initiative है that bring together leaders from government, business, civil society and academia to enhance the global understanding of the carbon pricing as a tool for accelerating and financing the effective climate action. It prepared to achieve the global development in carbon pricing implication for carbon market growth and broader limitation to carbon pricing potential. World Heritage Glacier Report released jointly released by the UNESCO and the IUCN, UNESCO and IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 1/3 of the glaciers among the World Heritage Site will disappear by 2050. 2050 तक कितने ग्लेशियर चले जाएंगे? 1/3. Third, glacier identified in 50 states of the 50 sites of the UNESCO World Heritage Site. अब जैसे ये सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में दिख रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में छोटा शिगरी ग्लेशियर, फिर उत्तराखंड में गंगोत्री, चौखंबा, कामेत एरिया, नंदा देवी. गंगोत्री, चौखंबा, कामेत और नंदा देवी. फिर आता है कंचनजंगा एरिया. उसके बाद है फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन, स्केलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस. ग्रुप वाज लॉन्च्ड in 2021 by COP26 conference and the United Nations climate change high level companies. 90% of the total climate fund is targeted for mitigation activities. So most CFs were raised as debt, of which only 16% was local. Most financing remains in the country of origin. Emerging market and developing economies except China will need 2 trillion per year by 2030. 2030 तक कितना मिलेगा? इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज एक्सेप्ट चाइना, उनको चाहिए हर साल 2 ट्रिलियन पैसा बाय 2030. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, उसके लिए जस्ट नीड अ ब्रेक. थैंक यू.